they chose that I should go and become the Air Officer commanding of Ambala, the oldest air base of Air Force. Ambala re ସେତିବେଳେ ଥିଲା 3ଟା फाइटर स्क्वाड, 2ଟା ଜାଗୁଆର ଆଉ ଗୋଟେ MiG-21 ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଥିଲା, ଗୋଟେ ପିଚୋରା यूनिट ଥିଲା. So when you say squad, how big is the squad? Squadron is comprising of about 18 to 20 aircraft, about 300 personnel, 25 to 30 pilots, and very satisfying tenure because you are actually looking after the management of a whole Air Force station comprising of about 4,500 personnel. Tanko family vise dele, it comes to about 15,000 people. This is how we grew up in service. તમે આગે પાયલટ અફસર છો, કુંડ કેરલેસ એટીટ્યુડ, ઓનલી ફ્લાઇંગ કરો, then you become a senior pilot, then you start teaching the youngsters, then you become flight commander when everything revolves around all planning with you, then you become a CO, then after CO you become a AOC. I mean, it's a process, and in between તમે મજર કોર્સ માં જાઓ છો, so it's a continuous process, like it happens in a business. When you start your business, you start small, then grow up, then you become in a managerial position. ଯଦି ପିଲାବେଳେ ମାନେ ଇନିସିଆଲ ଟାଇମ୍ ତମେ ବିଜନେସ୍ରେ ତମେ ଖଟିକିରି ଗେମ୍ ବୁଝିବ ନାହିଁ, ହେଲେ ତମେ ଉପରେ କରିପାରିବ. ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେମ୍ ଲାଇନ୍ରେ ଏଇଟା ହୁଏ. ତମେ ନିଜ କଥା ଭାବ କି when you started, you didn't start as boss straight away. No. Started with 3 flight project in 2008. So that's how all business is like that. And during those 3 young days, if you sweat it out, it helps you ପରେ. ସେତିକିବେଳେ ଯଦି ଆରାମରେ ନେବ ପରେ ତମେ ଜାଣିବନି କ'ଣ କର. That is a big difference. That same thing is applicable in the forge also. So ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ିକିରି ସେ ସେମିତି ହୁଏ ଆଉ. So based on this, like I read something called Harvard Business Review, सेठी leadership गुड़ाए examples था है, and they say the most important part which people don't understand, माने people जानते नहीं कि understand भी करते नहीं कि उन्हें leader को कौन दरकार. The most important part is emotional intelligence. कि मो सांगरे जे अच्छंती, मो तोड़े जे अच्छंती, मो सांगरे अच्छंती, मो ऊपरे अच्छंती, तांकरो emotionally कौन level रे से अच्छंती, तांको psyche टा कौन से केमती comfort हेबे, से केमती motivate हेबे, से केमती कामो करिवे. So emotional intelligence is the most important part. कामो तो समझते करचंती, कामो तो समझते जानते. So emotional intelligence को understand करिवको somewhere आमे armed forces रे कहन तो happiness quotient. Yes. Happiness quotient is understanding the last person जे कामो करूची से ता कामटा with motivation करूची ना नहीं. Satisfaction. I'll give you example. तमा construction business रे suppose someone is welding, दीटा rod को weld करूची, से जदि comfortably से कामटा करिवनी, तार जदि diversion ही जाइची, तार निजर personal किछे problem अछि, you as a leader have to ensure तमा तळे जो काम करूछंदी से each and every labor रो लाइफ को बुझिବାକୁ ପଡ଼ିବ. ସେଇଟା ଯଦି ସେ ବୁଝିଲା ଆଉ ତମକୁ ଫିଡବ୍ୟାକ୍ଟା ଦେଲା କି ଆଜ୍ଞା ଏ ଲୋକଟା 3 ଦିନ ହେଲାଣି କାମ କରୁଛି, ତାକୁ ଟିକେ ରେଷ୍ଟ ଦରକାର, ଜ୍ୱର ଅଛି କି ରେଷ୍ଟ ଜ୍ୱର ଅଛି, କ'ଣ ଅଛି, ତା ଫ୍ୟାମିଲିର କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, ସେ ଯଦି ଆସିକି କହିବ ଠିକ୍ ଅଛି, 1-3 ଦିନ ଛୁଟି ଯାଅ. 2 ଦିନ ତାକୁ ଯଦି ଛୁଟି ଦେଇଦେବ, ତୃତୀୟ ଦିନ ଯେବେ ଆସିବ ପୁରା ଏକଦମ ମୋଟିଭେଟେଡ୍ ହେଇକି ଆସିବ. ମ୍ୟାନେଜର ଏମିତି ବି ଅଛନ୍ତି, ନାଇଁ କିଛି ଛୁଟି ନାହିଁ, ତମେ କାମ କର. हाँ, से दुखी है काम करियो, गाली दो तो so that is what happens in day to day तमारो businesses. Same thing happens in armed forces also. जब वो बरनाला रे थी, I used to go for a walk in the evening around March April मास रे. जब जाऊ थी मु देखली गोटे फार्मर थिला, फार्मर होची तार 8टा महिषी थिला, से ताका चारिआडे मॉस्किटो नेट लगेला. तब पचारली ये भैंसा के लिए तुमने मॉस्किटो नेट लगाया, अच्छी बात है, हाउ डज इट हेल्प. से गोटे मत कहला विच इज एप्लिकेबल फॉर यू फॉर एवरीवन इन द वर्ल्ड. से मत कहला आज्ञा कि जो मॉस्किटो नेट लगी, मु पचारली केते टका लागला, कहला मत 20,000 टकार मॉस्किटो नेट लगी चारि. हाउ डज इट हेल्प. सो कहला महिषी को जदि मशा कामड़े राति जाक से गोड़ एमती करके निजक सेव करियो
ताकू जब मस्किटो नेट लगे देला परे मशा कम हेबे तो ताकू मशा कामड़ियन तो से खुशी रे रहइबो महिष जदि खुशी रे रहइबो प्रति महिषी दिन को 2 लीटर एक्स्ट्रा क्षीर दियो और 8टा महिषी अच्छी 16 लीटर एक्स्ट्रा मिलची 16 लीटर इंटू 30 इज 500 लीटर 500 इंटू 40 माने मासक मोर पैसा उठी जाऊँगी लुक एट हिज साइकी सी कहूँ मो महिषी को मत खुशी रखिले मत अधिक क्षीर मिलूँ सेम थिंग आपण एप्लाय करूँ एक्रॉस द बोर्ड तुम जो लेबर खुशी रहिबो तार आउटपुट बढ़ियो स्टाफ खुशी रहिबो तुम जो स्टाफ खुशी रहिबो से मैंने निज तरफ आज जब कम किसी पड़ा 7टा बेले नहीं कि 8टा बेले से निज तरफ रू करिवो सो दैट इज समथिंग आई लर्न फ्रॉम दैट फार्मर एंड दैट आई हैव अप्लाइड अक्रॉस द बोर्ड इन माय एंटायर सर्विस कैरियर आफ्टर दैट हैप्पीनेस क्वोशिएंट ऑफ पर्सनल तुम तले जे काम करछंती जदि तुम तांकु खुशी रखियो से मन निज तरफ रू कहबे सर आपण परंतु आमे देखिदेबू दैट इज समथिंग True. is what one needs to learn to keep the happiness quotient of the people working under you. So coming back to Ambala, had a great tenure. हमारा मझिरे मझिरे inspection भी हुए and I'm glad कि inspection रो outcome थिला I was chosen as the best operational station in the entire command. So you get a big huge trophy. So best operational station ro ये मिला and people were genuinely happy and it makes a difference. Here I must tell you that it's not cheap popularity that I was going for. I was firm where it is required and I was considerate where it is required. How does it make a difference? In an organization कौन हुए? It's a combination of hardworking people who don't want to work. As a leader, तुम जदि आइडेंटिफाई करि परिलो कि ये लोकटा ठीक रे काम करनी ताकू कौन चाबी देले से काम करिवो तुम जदि ए ग्रुप ऑफ पीपल से 20 को 3 जन को जदि जो माने सदाबले लुचिकी काम करती तांकू जदि काम करे परिवो जे काम करि तार मोरल औरी बढ़ी जो जस्ट रिमेंबर दिस